More breaking updates coming in, and the factory fire has broken out in the national capital. This is at Narela, where you can see these are the visuals from the fire at Narela. Fire breaks out in a factory over there. 20 fire engines have been rushed for operations at the spot. The fire is still on. Of course, it broke out at around a little past 9 o'clock last night. There are no reports yet of any injuries or deaths. But the latest that we can tell you is that the firefighting operations are still on at this factory location in Narela, in the outer district of the national capital. Staying with news from the national capital, and one of the top stories that we have been following since day before yesterday. Delhi cops have filed an FIR of criminal negligence in the West Delhi fire tragedy, which killed 27 people. There's, of course, a lot of people who are still missing, and the hunt is on for that. Now, in the FIR, the Delhi cops clearly state that the building owners and the company owners in the floor that the fire broke out knowingly risked the lives of nearly 100 people who were present at the spot that evening. All these 100 people used to work for a company called Kofi Impex and were taking part in a motivational program on the second floor when the fire broke out. The cause of the fire is yet to be ascertained. There's no clarity on what exactly triggered the fire to begin with, but there have been allegations that the doors on the second floor were locked from outside. Now, not just this, the FIR further notes that there were no emergency entrance and exit gates in the building. Neither were any arrangements made for the safety of the employees who were in the building that day. तो मैंने देखा जी बहुत आग लगी है, बहुत वहाँ अफरा तफरी मची हुई है। फिर मैंने क्रेन का बूम लगा करके उसमें 50 या 55 महिलाओं को हमने नीचे लिफ्ट दे करके उतारा। आग की लपट इतनी तेज हो गई कि हम फिर वहाँ हम काम नहीं कर सके और कुछ आदमी को हम नहीं बचा सके। उस टाइम तक कोई मदद की गाड़ी ना कोई दमकल कर्मी कोई नहीं है पहुँचे थे। कुछ जीने से, कुछ रस्से द्वारा, कुछ ऐसे कूद करके अपना जान बचा रहे थे। Now the FIR, first information report, which is registered in the case of Mundka, that also revealed under what circumstances and condition these women employees and the other employees of that CCTV manufacturing unit were working. In fact, there was no passage that is written, and there was no extra passage, means that the exit passage, whenever you are making such this huge building, then definitely you need to have different passage for any kind of emergency should be there, but there was no passage. This is clearly written, and also in the FIR this is clearly mentioned that there was no proper fire safety measures were being taken, and around more than 100 persons were just stuck in that particular floor, and it has written that it is completely the negligence on the part of the building owner as well as the factory owner. So that is why both of them are named in the FIR section 304 and 308 IPCs. The cases have been registered. So definitely the more and more people need to be inquired, but yes, very important to note here is that the accountability of the administration and the officials who allowed them to make such a huge building and allowed them to run this building without the proper security measures, they should also be held accountable. Let's also take you through some of the stories of people coming in from Delhi who have been trying to find their relatives. Remember, a lot of these bodies have been so badly charred that their identification has not yet been very easy for the Delhi cops or even the family members who have been desperately looking for some clues to either know whether their loved ones are still alive or no more. Now, Yashoda, a native of Bihar, is another person who's missing. She worked in the company for 3 years. She's survived by her children. Now, family says they are not getting any help from the administration to find her. ये हमारी नंद है। आपकी नंद? हाँ, इनकी सिस्टर है। एक बार फोटो दिखाएंगे? ये यशोदा इनका नाम है? हाँ जी, इनके पति हैं, ये पीछे इनके पति हैं। और इनके साथ में अभी 4 लेडीज और गायब हैं। इनके साथ अभी 4 लेडीज हाँ, और गायब हैं। पहला नाम है इनका जसोदा जी, और दूसरा है मोना, और तीसरी है निशा, चौथी है जूली, और 5वीं के अज्ञात है जिसका हमें नाम पता नहीं है।
5 लेडीज हैं। ठीक है, आप लोगों को प्रशासन क्या बोल रहा है, पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? प्रशासन तो ये बता रही थी कि धक्के, जब हम लोग आए हैं देखने को, ये धक्के मार मार के पुलिस वाले भगा देते हैं। बताइए कि प्रशासन क्या कह रहा है, अस्पताल वाले क्या कह रहे हैं? वो जवाब दे रहे हैं यहाँ कोई ऐसा पेशेंट नहीं आया। Musarrat, a mother of 3, is also missing since the day before. Now, Musarrat used to help in the CCTV packaging at the company. We spoke to her husband, who remains inconsolable. सर, आप ये बताइए कि आपकी ये कौन है? ये जी, ये मेरी वाइफ है। कब से लापता है? जी, कल से वहीं हाँ से? जी, शाम के टाइम फोन आया था। मैं तो गांव में था, यहाँ था नहीं। कहाँ पर? मैं गांव था, उड़ीसा में था। अच्छा, उड़ीसा से आप? हाँ जी, हाँ जी। और आपकी वाइफ यहाँ पर काम करती है? हाँ जी। ठीक है, ये बताइए मुझे कि आपकी वाइफ जो है वो क्या काम करती थी यहाँ पर? जी, सीसीटीवी कैमरे बनते थे वहाँ पर, तो वहाँ स्टिकर वगैरह लगते थे, सफाई होती थी, उनकी कैमरों की पैकिंग होती थी। तो आपके कितने बच्चे हैं? जी, 3 बच्चे मेरे, 2 लड़की है, 1 लड़का है। क्या नाम है वाइफ का? वाइफ का नाम मुसर्रत है। मुसर्रत। हाँ जी। सर, क्या कहेंगे, कुछ नहीं कह सकते सर, अब इसमें क्या कहेंगे। कैसे रोका जा सकता था? नहीं होती है घटना। ये है कि अगर वहाँ पे थोड़ा सुरक्षा का इंतजाम होते, जो वहाँ व्यवस्थाएं होती हैं फिर कंपनियों में होनी चाहिए फायर के लिए, वो चीज़ नहीं थी। अगर वो होती तो शायद ऐसा ना होता। Madhu Devi, there's a reason we are taking all these names so that they reach the right ears. Now, it may be just another name for you and me, but not for the people that have lost their loved family members. Madhu's husband has, in fact, been trying to call her since Friday, but sadly, he's not got any response, of course, and neither have the authorities made it clear that whether or not where he can, in fact, find her. आपकी अपनी वाइफ का नाम क्या है? मधु देवी। मधु देवी कितने समय से नौकरी कर रही थी यहाँ? 1.5 साल से ऊपर हो गए। 1.5 साल से ऊपर हो गया। तो कल क्या हुआ था एग्जैक्टली, और आपको कैसे पता चला घटना? मैं तो ओखला गया हुआ था, तो मुझे फोन आया था 5:30 बजे, जो भतीजे ने फोन किया था, जो मधु चाची की कंपनी में आग लग गया। बोला क्या बात कर रहा है। फिर मैंने वहाँ से भागा आया गाड़ी लेकर के, तो वहाँ पे देखा मैंने कि आग सच में लगी है, कुछ नहीं बचा। मैं पहुँचा 6:15 से ऊपर हो रहा था मेरा टाइम, 6:30 बजे पहुँचा। तो मैं भी जाम में से ही निकल के अंदर घूम के आया था। बहुत समय लगा। दिख रहा था कि अंदर आग लगी हुई है और लोग फंसे हुए हैं, पर निकलते हुए एक भी आदमी नहीं दिखा मेरे सामने। आपको निकलते हुए नहीं, मैंने किसी को निकलते हुए नहीं देखा। जिस टाइम मैं पहुँचा उस टाइम में भयंकर आग लगी हुई थी। ठीक है, फिर उसके बाद आपने बीवी के मोबाइल पे फोन किया? हाँ जी, शुरू में जब फोन किया हमने, जब आग चालू हुई थी उस टाइम में कॉल जा रही थी, घंटी जा रही थी, उठा नहीं रहे थे कोई। उसके बाद जब फोन दोबारा की हमने 5:30 बजे, उसके बाद तो वो फोन डेड हो गया। फोन बंद हो गया था? बंद हो गया, कुछ नहीं पता चला। और उसके बाद से बंद ही है फोन? अपने हॉस्पिटल में पता करा अभी तक में, क्या बता रहे हैं हॉस्पिटल वाले? हॉस्पिटल वाले जैसे अब शिनाख्त नहीं हुई है तो अब DNA टेस्ट होगा, उसके बाद ही पता चलेगा। 18-year-old Nisha is still missing. She's been working at the company for the past 2 years. She gave 2 years of her life to the company. Now we ask, what did she get in return? आपकी सिस्टर का नाम क्या था? निशा। निशा, क्या बोल के कल गई थी और कब, कैसे पता चला आपको घटना के बारे में? वो हमारे और दूर से बताए थे ना, एक लड़की रस्सी में से खुदक के आई नीचे, तो वही बताने आई थी हमारी गली में कि फैक्ट्री में आग लग गया, तो हम सब गए थे देखने। हाँ, जब आप लोग पहुँचे तो आग लगी हुई थी? हाँ, बहुत ज्यादा। तब फायर डिपार्टमेंट गाड़ी आ गई तब तक? बीच डंपर आया था, तभी आग नहीं बुझा। आग नहीं बुझ पाई? नहीं। और आपकी सिस्टर कब से काम कर रही थी वहाँ पर? 2 साल से।